हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। आज है 27 अप्रैल 2023, यानी कि 27 अप्रैल 2023। What a day it is. It's a Thursday and I can see a lot of interesting news for you all. And काफ़ी कुछ कवर करेंगे आज इस सेशन के अंदर। एंड आई कैन सी ऑलरेडी इतने बच्चे आए हुए हैं एंड सो मेनी क्वेश्चंस, ऑलरेडी सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं। ताने, शिवम, रघुवीर, बबीता यादव, हिमांशु, विराट, भास्कर, अक्षदीप, साधना चौधरी, कीर्ति श्रोतिया, अमितेश, मोहित, अंश, विराट, अभिषेक, ध्यानी, दीक्षा, शत्रुघ्न, गरिश्मा, जयराम, जय शर्मा, रितेश, श्रेया, सुमेध, दीपक, सानू, अंश, संजीव, खुशवा, वैभव। मतलब इतनी सारी ऑलरेडी आप लोगों के जय हिंद और मैसेजेस हैं। आई विल ट्राई एंड टेक सम क्वेश्चंस। अब ये शुरू में लूँगा, बाद में देखता हूँ। मोहित, प्रवीण, आदित्य, विश्वकर्मा, आई एम वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, मैक्सिमम गुड मॉर्निंग, जय हिंद है। ओके, रघुवीर सिंह, सर आई एम प्रिपेयरिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम ऑफिसर एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम ऑफिसर फॉर ज्वाइनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड ऑफिसर। वेरी, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी? ओनली बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन सीडीएस एग्जाम इंग्लिश पेपर ऑफिसर ट्रेनिंग। इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स पढ़ें? बबीता यादव, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड मेरे प्यारे बच्चों को मैं बार बार बताता हूँ, लैंग्वेज प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। कुछ मेहनत खुद करनी पड़ती है वोकैबुलरी पिकअप करने के लिए, एंड उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन अमेजिंग थिंग। न्यूज़पेपर आपको 3 चीज़ें देता है। न्यूज़पेपर क्या देता है? आपको 3 चीज़ें देता है। सबसे पहले न्यूज़पेपर आपको ज्ञान देता है, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इसमें है नहीं, ठीक है, अफवाहों में नहीं है। न्यूज़पेपर जब छपता है एक गारंटी लेते हैं, और अगर कोई गलत चीज़ छप जाए तो अगले दिन खंडन करते हैं उसका, किसी हमसे गलती से हो गया। न्यूज़पेपर, टीवी वाले आधी झूठ पेल के जा सकते हैं, बाकी लोग भी व्हाट्सएप पे झूठ बोल सकते हैं, बट अखबार की एक क्रेडिबिलिटी है। तो न्यूज़पेपर गिव्स यू ज्ञान, इट गिव्स यू करंट अफेयर्स। दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर से क्या होती है कि योर वोकैबुलरी इम्प्रूव सो मच। Even just 3 months of reading newspaper regularly, you will see your English vocabulary at another level, at another level. और बहुत सिंपल भाषा में ये दिया जाता है। एंड लास्ट थिंग दैट द न्यूज़पेपर डज इज़, ये आपकी रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करता है। रीडिंग हैबिट को हम लोगों ने अखबार से शुरू किया, पेपर में स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते थे, क्योंकि उन जमानों में टीवी नहीं था, रेडियो कमेंट्री नहीं, तो हम अगले दिन ये देखना चाहते थे मैच में क्या हुआ। ये बात मैं कर रहा हूँ 1972, 73, 74 की, कि मैच में हुआ क्या। तो उसके लिए वी वुड रीड द स्पोर्ट्स पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर टू सी वेयर इज द हॉकी टीम और ओलंपिक्स और एशियन गेम्स, या क्रिकेट टीम ने कहाँ पे क्या किया। सो न्यूज़पेपर हैज़ अमेजिंग क्वालिटीज़। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ, आज दोबारा बता रहा हूँ आपको, लाइव टीवी पे, लाइव यूट्यूब पे, जिनके घरों में 2 इंग्लिश के न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, जिस हाउसेस विच डू नॉट गेट 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आई कंसिडर देम इलिटरेट, even if there are PhDs and super PhDs and MPhil and postgraduates staying in that house. ठीक है, सो इंग्लिश न्यूज़पेपर, बिकॉज अदर न्यूज़पेपर्स गिव यू लोकल न्यूज़, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाली विल गिव यू लोकल न्यूज़। बट इफ यू एस्पायर टू बी एन ऑफिसर, if you wish to be an officer, you need to read English newspaper, because ये देश की खबर कवर करते हैं, दुनिया की खबर करते हैं। I hope that is clear. Okay, so that is why, and English newspapers like Indian Express, Times of India, Hindustan Times, the Tribune, and the Telegraph, Deccan Herald, they have been there for hundreds of years. They have been there for hundreds of years. ठीक है, चलो, तो I can see we have our classes crossed 100 live learners. एंड अब मैं स्टार्ट करूँगा मॉर्निंग सेशन के साथ। एंड प्लीज़ दोबारा वो वीडियो देख लो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, मेरे चैनल पे। आज फिर मैंने एक वीडियो टेलीग्राम पे शेयर किया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB। प्लीज़ सी दिस एंड शो इट योर पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स को भी दिखाओ, ये 14 दिन की कोचिंग लेने से नहीं क्लियर हो सकती SSB। वो जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे, वो वहीं कहीं से भी हो सकते थे,
you need sustained effort over a period of time to improve your communication skills, your leadership skills, your attitude, your personality, and तब जाके आप जो है recommendation के दरवाजे पे पहुंच सकते हो. Anyway, so we'll start with today's Indian Express, and the not so good news. After a period of peace for a long time, we have another moist attack in Chhattisgarh in Dantewada. A van has been blown up and you can see the crater here. आप ये खड्डा देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा टीवी पे देखा होगा. The vehicle has been totally destroyed. So one driver and 10 people of district security guard, reserve guard, returning in a van after a security operation have been killed by an IED. तो इसमें क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए? What is IED? Improvised explosive devices. IED है improvised explosive devices. Okay. The other thing that you need to know is this: who are the Maoist? Who are the Naxals? Why Chhattisgarh? Why Dantewada? इसके पीछे क्या इतिहास है? This is the same place where we had a massacre of CRPF people. More than now it must be more than 15 years back, as I remember, 10 to 15, certainly 11 to 12 years back. So there is a class of mine and this is the map given. ये देखो मैप दिया हुआ है, ये दांतेवाड़ा कहाँ है. तो अब मैप नहीं होगा आपके पास, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं होगा आपके पास, तो how will you gain knowledge? How will you gain knowledge of events like this? So please study about this Naxal insurgency. What are the aims? What are the objectives? What is the red corridor? How did it start from Naxalbari? How did it spread? Now where is its impact in Chhattisgarh, Telangana and these areas? You should know. मेरी class है, if you can, there is a class of mine on this issue, on special classes, but I can bring such issues for you all again and again, because ये current affairs का subject है, but हमेशा relevant. And back page पे they have given the table. They have given the table of Maoist incidents in Chhattisgarh. Maoist killed, देखो 2019 से लेके 2022 4 years का data they have given. In 4 years 65, 36, 47, 32 Maoist killed. Security personnel 20, 35, 44, 9. Exchange of fire. So Maoist arrested and Maoist surrendered. So this is the data given in the back of the paper. So this is an issue which has again come in the forefront. So please read up about Naxalism. Please read up what is the agenda of this Maoist, who are supporting them, where do they get their weapons, where do they get their funding, and what are the other issues of the tribal areas of this region. ठीक है, पढ़ लेना, इमोशनल नहीं होना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, so that anywhere you get a chance, you can debate, you can discuss, you can talk like an educated person, ठीक है. So now we come to the editorial. And here we have Pakistan's old ploy. This is written by Jan Syed Hatta Hasnain. He was GOC of the 15 Corps, and by the way, he is direct entry. He is direct entry officer. He studied in St. Stephen's College, and like me, joined Indian Military Academy through the CDS. So both of us are not from NDA, but here he is a prolific writer and is also Chancellor of the Kashmir University. Kashmir University के Chancellor भी है ये, and one of the finest military officers. When he writes, it calls for reading. So he says, Poonch terror attack is another instance of low intensity conflict. Delhi must not respond in haste. So he's saying India must not do anything in a hurry despite the cynicism that will aim to target the government. Foreign policy has been well handled and no major decisions are required when there is an international strategic churn in progress. So international strategic churn हो रहा है because the Russia-Ukraine conflict, the tension in Middle East, the tension in South China Sea, and the way Saudi Arabia and Iran have come together as friends. So ये सब चल रहा है, सूडान में लड़ाई चल रही है, so international strategic relations are under churn. Recalibration to balance out the attention between the northern and western borders will ensure greater pragmatism and proper security focus. Pragmatic,
वर्ड बता दिया आपको, pragmatism, ठीक है. So northern borders, when we say China, and when we say western borders, we mean Pakistan. The strategic community and the media must assume a larger and more pragmatic role instead of pressurizing government into any hurried decisions. तो इस पे जिंगोइज्म नहीं होनी चाहिए. What he means to say, rhetoric नहीं होना चाहिए इस पे. These issues must be handled by the military, by the National Investigation Agency, the J&K police. We must investigate, get these guys, search them down, hunt them down. That is the way to deal with this, because it should not result into one way rhetoric at the top on the TV studios, and other way, if there's too much of pressure on the government, then local people also their life gets disturbed, their life also gets hugely impacted and disturbed because of such actions. तो ये है पुंछ में जो टेरर अटैक हुआ था 4-5 दिन पहले, where 5 soldiers were killed in action in a vehicle which was moving from Bimbar Gully to Surankoट, that area. वो मैंने आपको मैप के साथ समझाया था. I've served in that area. मैं 3 साल वहाँ नौकरी करी है. वो काफ़ी पहाड़ियाँ मैंने जो है उन पे मैं चढ़ा हुआ हूँ या घूमा हुआ हूँ पे. Now the next is an editorial here. This is building wealth. While governments need to usher in more flexible labor regime, they need to be mindful of concern of workers. So this is regarding the Tamil Nadu labor law, which was very dynamic in nature. Instead of 8 hours, you can do 12 hours in a day and finish it in 4 days in a week. And 3 days you can be off, do something else. That has been taken back by the government. But this editorial says that while government need to usher in more flexible labor regime, they need to be mindful of concern of workers. That we need to be dynamic as a growing economy. If you really want our economy to be a producer's economy, a manufacturer's economy, जो चाइना है आज के दिन, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में, we are lagging behind. So if you have to, then we have to have very flexible laws for labor. Only then people will employ labor. If you put restrictions कि 70% locals, 75% locals, 50% locals, so many hours, then some labor inspector will come, show me your register. It takes away the entrepreneurial skills of people, or it inhibits them if there are too many compliances. तो उसके ऊपर है. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेबर लॉज के बारे में. लेबर लॉज वर्सेस इकोनॉमी, एंड कैन वी बी मोर डायनेमिक, कैन वी बी मोर flexible. This is, of course, there's an editorial also on Sardar Prakash Singh Badal, who died after long illness yesterday. And then, of course, there's a full-scale article on him, his politics, and the way he steered the Punjab politics for last 50 years. But we will move to, this is keeping it cool in summer. Indian cities and towns need heat action plans to deal with health challenges posed by global warming. So our towns and cities, in winters we have problem. We have to make shelters because poor people have no place to go. Many of them freeze to death. In summer, many of them die because of heat stroke, lack of hydration, and lack of shade and other things. So उसके ऊपर ये बात है इसमें. This is, of course, a nice piece by Usha Subramaniam. She is Mumbai-based academic and social commentator. Engage, do not delete. By critically reviewing aspects of history, we can stimulate fresh discussion. So, by ignoring certain parts of history, there will be gaps, and we must discuss. We must, if you look back, history must be read in a positive manner. Good, bad, ugly. It's our history, our people. So read it as an academic exercise, and don't try to use something that happened 200, 300, 400, 500 years back now to spread some other kind of a thing. So that is a danger when you look at history from a myopic point of view. Anyway, now we come to explain. And here I have 3 important pieces for you. Challenge in Punch, terror push in Jammu, Bakarwal, alienation. So this is written by Nirupa Subramaniam. When she writes, please read. She writes on international affairs, also on national affairs. She's a regular contributor to
the Indian Express. So what she says is that the ongoing manhunt in Punch for the perpetrators of April 20 ambush on the army truck that killed 5 soldiers highlights the importance of securing the border district of Punch and Rajouri. Punch and Rajouri are border districts south of Pir Panjal. अगेन मैप नहीं देखोगे J&K का बच्चों कुछ समझ नहीं आएगा कि पुंछ कहाँ है, रजौरी कहाँ है, डोडा किश्तवाड़ कहाँ है, अनंतनाग कहाँ है, बारामुल्ला कहाँ है, कपवाड़ा कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है, अवंतीपुर कहाँ है, पुलवामा कहाँ है, कुछ नहीं पता लगे, ऐसे घूमते रहोगे. सो प्लीज open the map of J&K in an atlas and see your state. So south of Pir Panjal ranges is Punch and Rajouri on the western flank, on the absolutely west. ठीक है. So the attack and the subsequent search operations involving soldiers, drones, sniffer dogs recalls October 2021 ambush on the army in the same area, and the search stretched for nearly 2 months. More soldiers were killed before the search came to an end after failing to trace. So last time 2021 mein when a massacre took place here, we could not trace anything. So same area, several incidents. So October 2021 attack was followed by 3 major incidents in the same area. So she's highlighted these incidents, and then 2 decades of peace in Jammu and indications of change again. Indications of change again. तो ये जिसको interest है insurgency में, counter insurgency में, terrorism can be read. Now we come to why Chhattisgarh, why now? This is by Diptiman Tiwari, and they have given up and down battle against the Maoist. So he says every year the months preceding the monsoon, preceding se pehle, preceding the monsoon see heightened military activity and more attacks by Maoist on security forces. Chhattisgarh, where Maoist killed 10 security personnel and their driver on Wednesday, has been slow to raise a strong local force considered key in fight against LWE. इसको कहते हैं LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. मॉइज्म को एक टेक्टिकल टर्म्स में या मिलिट्री टर्म्स में या यूज करने के लिए वी कॉल इट LWE एक्सट्रीमिज्म. सो व्हाई हैज द मॉइस्ट कैरिड आउट दिस अटैक एट दिस टाइम? देन व्हाट इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? ये क्या है LWE? एंड situation in the country now, where all it is there. What is the situation in Chhattisgarh? So why does Chhattisgarh continue to remain troubled? How has the center responded? Center का क्या respond रहा है? So ये सब चीज़ें you can read on this issue, but this is an issue cannot be ignored. And finally we come basic structure only safeguard against majoritarian government, Ram Chandran. So this is an interview with senior advocate Raju Ramachandran with the Indian Express, and he says that the 1973 judgment, which was on basic structure, where they say parliament cannot tamper with the basic structure of the Constitution of India, उस पे बात है कि whenever there is a majoritarian government and wants to push its own ideology or agenda, there can be basic structure can safeguard against it. तो इसके ऊपर इन्होंने बात की है. ये भी करंट सब्जेक्ट है, कई बार मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ. बेसिक स्ट्रक्चर पे, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, एंड अदरवाइज on the judiciary, the powers of judiciary, the powers and the powers of the parliament. मजा आ रहा है तो give a thumbs up. बच्चा पार्टी give a thumbs up. If you're if I can, I don't know how many of you are live. बता भी देना. Sudan fighting flares up as ex-president Bashir moves out of jail. Civilians flee to border points. So Sudan is not stopping anytime soon. And again, the problem in Sudan is also who gets hold of the resources. It's a gold-rich country. Which is controlled by RSF. The military general, who is many years senior to the RSF chief, wants to have a more say in the resources and in power of the nation. So because of that, these two forces are fighting, and I don't know, 400-500 लोग मारे जा चुके हैं, and what is the condition there? Finally, China. I was wondering, Xi Jinping went to Moscow, 2 दिन रहे वहाँ, उनकी पुतिन की मेज़बानी में भी उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया, उनसे बातचीत की. But what is the reason that he or any of his ministers not visited Ukraine? If they say we are neutral in this war. But finally, first exchange was Zelensky gets phone call from Xi Jinping.
सो शी जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की साहब को फ़ोन पे बात की, बीजिंग सेज विल सेंड एनवॉय, और उन्होंने कहा है हम भेजेंगे एनवॉय टू एक्सप्लोर हाउ पीस कैन रिटर्न टू दिस रीजन. सो देयरफॉर यहाँ पर भी चाइना इज नाउ अंडरस्टैंडिंग. पुतिन की सुन ली उन्होंने 2 दिन, जो पुतिन जी ने बोलना था सुन लिया अच्छे से. हाँ बताओ भाई आपकी क्या प्रॉब्लम. अभी दे हैव रीच्ड आउट टू ज़ेलेंस्की. Xi Jinping will himself not go, but because ये NATO controlled है, NATO का influence है, and China in any case will do everything possible to reduce the role of NATO. But if they send an envoy there and there are talks that take place, and अगर किसी तरीके से China brokered ceasefire हो जाए, तो this will be an amazing thing for China and its diplomacy. So China has emerged as a major buyer of Russian oil. We are also a major buyer and can no longer be sold in Europe. And firm critic of Western sanctions against Moscow, but has held back from openly supporting the invasion. तो अब तक चाइना ने invasion को support नहीं किया. They may be in the Russian camp. In fact, Russia is in the Chinese camp. But China has not supported the invasion till date. Mind these things. Then of course in Beijing, Pakistan Army Chief hold talks with top Chinese general. तो पाकिस्तान आर्मी चीफ की एक विजिट या 2-3 विजिट होती हैं चाइना में. सो आसिम मुनीर, who became chief few months back, has flown to China to have a good time and to talk to the Chinese army chief for आपको पता है उनके relations higher than mountains, deeper than ocean, sweeter than honey. This is the way China and Pakistan describe their relationship. ये मैं बहुत यूज़ करता था स्पेशल क्लासेस में. हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशंस, स्वीटर देन हनी. तो ये इनकी दोनों की जो है दोस्ती का राज है. ओके, सो गुड टू सी लॉट ऑफ यू enjoying the class. We'll come to the Hindu now. In the front page is this picture of 360 Indians evacuated back home. और उससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं होती when you come back to your own home, that is India. ठीक है. And this is of course the crater in Dantewada where this 10 policemen and a driver have been killed by the Naxals. Yeah. Now we come to the editorial. And 2 things I will touch. This is written by ex Vice President of India, Hamid Ansari ji, and this is of course an editorial on the bill. Few months back, Rajasthan came up with this very innovative right to health. काफ़ी दिन the private hospitals, clinics and doctors were on street, but now that thing is their agitation is over. Now Rajasthan has come out with another amazing initiative, and this is initiative on gig workers welfare board heralds good tidings. तो ये मैंने आपसे कल भी कवर किया. एक फ़ोटो दिखाई थी मैंने गिग वर्कर, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये ब्लिंकिट, ये दुनिया भर के जो इस टाइप की ऐप्स हैं जो आपको सामान पहुंचाते हैं, दे आर कॉल्ड गिग वर्कर्स. इनके बेचारों की कोई राइट्स नहीं होती, कोई इंश्योरेंस नहीं होता. तो राजस्थान गवर्नमेंट, एंड देयर आर 8 मिलियन पीपल. कितने लोग हैं? 8 मिलियन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो सुबह साइकिल और स्कूटर पे निकलते हैं. ठीक है. तो एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री बिल्ट ऑन द बैकबोन ऑफ स्मार्टफोन रेवोल्यूशन. सो दिस इंडस्ट्री इज बैक्ड ऑन द स्मार्टफोन. मुट्ठी में ऐप है, दबाया ये खाना आधे घंटे में घर पे, ये सब्जी, ये दूध, ये कुछ भी मंगा लो, सब पहुंच जाता है. So smart gig work has become major source of jobs for youth in India. तो काफ़ी इतने नौजवानों को नौकरी दी हुई इन्होंने. It goes without saying that in a country where informal labor and unemployment have defined the nature of job markets in the last decade, the gig economy has been a beneficial outlet for. तो जहाँ ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ इन बच्चों को जो है ये नौकरी का एक जरिया मिला हुआ है. So this is especially true of youth and migrant workers as they seek a ready and quick means of securing finances and flexible hours, an option used by informal workers who have used gigs for moonlighting. तो वो 2-3 काम कर रहे हैं.
वो गिग वर्कर कुछ घंटे ये काम करता है, फिर उसका ऊबर चलाए, गाड़ी चलाए, फिर कुछ और कर रहा है, जस्ट टू मेक देयर एंड्स मीट. सो उनके लिए देयर इज अ मूव that Rajasthan government has made gig workers registration and welfare bill 2023 should be welcomed if even if it will be introduced before the assembly elections later this year. So एक वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं इनके लिए, एक वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है. चलो, नाउ वी कम टू दिस आर्टिकल रिटन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर हामिद अंसारी. ही सेज व्हाट अबाउट फ्रेटर्निटी. ये वर्ड फ्रेटर्निटी वर्ड पे इन्होंने बात किया है. In the concluding session on the committee on November 25th, 1949, Bhimrao Ambedkar drew attention to a lacuna in the draft. The second thing we are wanting in is recognition of principle of fraternity. What does fraternity mean? What does fraternity mean for a nation like ours? जिसकी मैं बहुत बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा खुल के मैं ही बात करता हूँ fraternity की. Fraternity means a sense of common brotherhood for all Indians, if Indians being one people. क्या हम भारतीय एक लोग हैं, हिंदुस्तानी एक लोग हैं? इज बीइंग इंडियन बीइंग्स वन पर्सन, वन कलेक्टिवली वन कम्युनिटी, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग आवरसेल्व्स इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एंड देन जाट, गुज्जर, राजपूत, अहीर, ब्राह्मण, कायस्थ. इसमें किस में हम? तो फ्रेटर्निटी पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी. इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडारिटी टू सोशल लाइफ. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव. तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में हमारे ये सॉलिडारिटी चाहने के लिए वी नीड फ्रेटर्निटी. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, उसके ऊपर इन्होंने बात की है. बड़ी अच्छी बात है. वी शुड ऑल हैव दिस यूनिवर्सल ब्रदरहुड अमॉन्ग अस, ईच इंडियन, अमॉन्ग ऑल इंडियंस. नाउ कम्स दे टेक आउट दिस अमेजिंग आर्टिकल. से कुछ दिन पहले वैगनर ग्रुप पे था. अब बच्चे सर वैगनर ग्रुप, मैंने कहा उस दिन का आर्टिकल काट लो, हिंदू से, नेट से डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो. अभी है ये एम्बिग्यूटीज इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ. ये फिर से जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के यहाँ एजिटेशन चल रहा है. पहले भी बहुत एजिटेशन हुआ था. सम सेज इट्स द NGOs who are doing it. People get paid for it to launch agitation like this. I don't know. We will go by the press reports. But what are the provisions of Indian nuclear liability law? What does it say about supplier liability in the event of a nuclear accident? Why do some provisions in the law continue to make foreign companies wary of signing deals with India? What has government said on the issue? तो ये न्यूक्लियर लाइबिलिटी को लेके है कि अगर कुछ लीक होता है, कुछ होता है, तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. We have had weak laws. That is why we had accident like Union Carbide in Bhopal. This is again an article shining a light on the darkness of ignorance through literary LGBTQI tales. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं हैरान हो गया इसको पढ़ के कि हमारे स्क्रिप्चर्स में और हमारी स्टोरीज में there are so many instances of LGBTQ incidents in our mythology. That means India was a much more open society than what we are having today, where the government, all religious leaders have gone to Supreme Court. जी इनको शादी मत करने देना, हमारा क्या होगा, हमारा marriage system collapse. The government is fighting tooth and nail. All religious heads, all religions have said कि नहीं, please don't give permission to same-sex couples. But here is a wonderful article where they have given examples from Kama Sutra, examples from Ved Puran, examples from Mahabharata. Lot of examples are given where, and stories of from India, written in last 100-200 years, where we accepted that this is also some form of gender or some form of people do have this in their lives. तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, know your English, पढ़ लो, and the word of the day. This is, of course, more and more analysis will be done. Biggest attack by Naxals in Chhattisgarh in last 2 years. How it happened, why it happened. But why I opened this page was to draw your attention to this. Angry with reform delays, India calls UN system anachronistic.
So this is India's representative to the UN, Ruchira Kamboj, speaking at a session how to make multilateralism effective by defending the UN Charter. So UN has not transformed since 1945. No changes have been made in the basic structure. दुनिया इतनी बदल गई है. इस पे मैंने क्लास ली हुई है, रिफॉर्म्स इन द यूएन. आप देख लेना. आई कैन ब्रिंग दिस क्लास अगेन फॉर यू कि यूएन में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए हैं, इंडिया के लिए क्या रिफॉर्म्स हैं, दुनिया के लिए क्या रिफॉर्म्स हैं, वाई यूएन इज नॉट रिफॉर्मिंग, क्या रीज़न है, यूएन क्यों नहीं रिफॉर्म हो रहा है, हु आर द पावर्स. So this is on that. Good, India has called this out, and every occasion where we must call out this hypocrisy of the P5. I call it the hypocrisy of the P5. वैसे लड़ते रहते हैं, लेकिन all P5, unless they get together, there is no reform. And why should there be P5? Why should there be P5? This is of course she holds talks with Zelensky. ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए. एंड पाकिस्तान में भी there is a parliament versus judiciary. India also some form, and Israel to you're aware. So this is an issue a lot of democracies are facing, that is between the courts and the elected representatives, that is the parliament. We come to the Times of India. Very briefly, this is of course I've covered. इनकी पिक्चर थोड़ी अच्छी होती हैं. Speak in first known contact since Russian invasion. So after 15 months, finally Xi Jinping has called up Zelensky to ask how are you. And this is not to same-sex marriage will ruin Special Marriage Act intent government to Supreme Court. So these are going every day, and every day there are arguments for and against this issue, but the government is fighting this tooth and nail and is telling the Supreme Court ki please don't do anything, let the parliament debate. The people are saying even 377 was removed by court and not parliament. Given to parliament, they may not even discuss this issue for years and years together. तो ये है, and it's a fundamental issue of human right. Fundamentally बहुत issues हैं इसमें. ये water bodies को लेके over 24 lakh water bodies, but 1 out of 6 can't be used. ये सेंसस हुई है इंडिया की. ये पूरी रिपोर्ट नेट के ऊपर अवेलेबल है. You don't have to read the entire report, but you must know that how sensitive this issue is for our ecological survival of our people and our animals and marine life, of the protection of water bodies. Then I will take you to the editorial. Let us see इन्होंने क्या कहा है, किस मुद्दे पे बात की है. Yes, here we are, the editorial and remission impossible. I was just waiting कि some paper will comment on this. कल बहुत hard hitting था. I read it out to you. This release of Dawn come politician by Bihar government by amending the jail manual. So अब आया है, in Bihar, Gujarat and Haryana, government decisions on early release paroles are huge blows against justice. तो कोई इसमें you can't blame one. In Gujarat, Bilkis Bano, family butchered, raped, child killed, released on parole. पहले तो पैरोल पे फिर छोड़ दिया उनको. देन हरियाणा में क्या नाम है इनका, गुरमीत राम रहीम, he's been convicted of rape, he's been convicted of murder, life imprisonment, and whenever there is election he is released on parole. He has been out so many times. एक बार तो यहीं रहते थे गुड़गांव में, मेरे घर के पास. मैंने कहा ये सिक्योरिटी क्यों, हम वहाँ साइकिल पे आते थे. कहते सर राम रहीम रह रहे हैं. Z+ security. Z+ means there are a couple of police officers always outside his house with barricades, this, that, ये वो सब. I don't know Z+ में क्या क्या आता है. So they were there. Then he's giving sermons, he appears in front of public, does everything. So these 3 cases, the editor has highlighted that for political reasons we give damn to justice. So
आर ह्यूज ब्लोज अगेंस्ट जस्टिस व्हेन यू डू दिस. सो तीनों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ठीक है. देन ऑफ कोर्स इज ऑन सूडान बाउंटीज कर्स, जो मैं आपको बता रहा था. सूडान की प्रॉब्लम क्या है, ये गरीब देश में अफ्रीका में रहा हूँ. इनफैक्ट व्हेन आई वाज ऑन टीवी शो द अदर डे, आई टोल्ड देम दैट आई हैव सर्व्ड इन अफ्रीका फॉर 1 year. आई वाज इन मोजाम्बिक in 93-94 as a UN peacekeeper. So same thing is happening in Sudan. Another example of what happens to natural resource rich but politically mismanaged country. ये अगर आप डायलॉग कहीं बोल दोगे ग्रुप डिस्कशन में, क्या है, रिसोर्स रिच politically mismanaged, no instability, आर्मी जनरल्स, आर्मी पीपल और मिलिशिया AK-47 लेके. और ये मिलिशिया कौन है, जिनको कोल्ड वॉर में या तो यूएस ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया. There is blood on the streets, blood on the sand of these countries. तो ये बात हो रही है. सूडान is one of the poorest countries of 46 million people, annual income of less than 750 per capita, but rich in gold. तो ये सूडान की कहानी है. Okay. So here we are. Now I'll take your questions. What are the qualities of team leader? You must read my article in this book, Men of Steel. इसमें one of the chapters by me is on teams. I've always believed in creating teams, creating successful teams which can do wonders. Okay. Now I will take your questions. Bhaskar Singh, age 23, my qualification BSc with physics honors, preparing for CDS OT. I want to join Army Aviation Corps. Corps नहीं होता, कोर होता है, CORPS. Am I eligible for that? देखो ये मैं रोस्ट करूँगा आप लोगों को कि आर्मी एविएशन जाना चाहते हो या आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो. Who can guarantee you whether you will get aviation or not? You may go to infantry, you may go to artillery. You are a BSc honors in physics, so you may go into EME, you may go into something else. तो प्लीज इतना मत, you just say कि सर I am preparing to become an officer and I will desire to be in aviation. तो ये कोर का स्पेलिंग CORPS होता है, CORE नहीं होता है, ना COPS होता है. प्लीज सर आई टॉक यू ऑन व्हाट्सएप, टेल मी अबाउट व्हाट आई सेड. अक्षदीप राजपूत, मुझे याद नहीं व्हाट्सएप पे क्या बात हुई थी. गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आई एम फाइन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जय शर्मा, जय हिंद, जय हिंद. सर आई एम स्टार्ट टू स्पीकिंग बट, आगे बंद कर दिया है. हिमांशु में भी सेंड हो गया होगा गलती से. आई एम फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट, CAPF दे पाएगा? जरूर दे देंगे. कौन से शहर की इंडियन एक्सप्रेस लेनी चाहिए? सी मेन एडिशन इज दिल्ली, बॉम्बे, दिस मेट्रोपॉलिटन एडिशन. बट कोई भी एडिशन आप ले लोगे, वो मेन आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, आज नहीं तो अगले दिन प्रिंट होते हैं. पॉडकास्ट कब रिलीज होगा आई डोंट नो. वॉइस इज नॉट कमिंग, माई वॉइस इज नॉट कमिंग. अच्छा, थैंक यू जय शर्मा. Sir, can I still enroll Air Warrior? Not for this course. This course is closed. The next course will be mid-May, next month. उसके लिए BOC, but BOCC जैसा कोर्स कोई नहीं है. नकल बहुत लोग कर रहे हैं, जिनको भी अरे यार सर तो ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं, हमने सोचा ही नहीं था. तो बहुत से लोग अभी इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं, बट BOCC इज़ अ यूनिक कोर्स. आकाश द्विवेदी, यस. I am pass out from OTA and IMA. I joined OTA in 1983. I joined OTA in 38 short service course, 38 SS, but left after 3 months and joined IMA. I joined IMA in 1984, January 1984. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत है NDA में, वर्ल्ड क्लास. उसकी चिंता मत करो, पहले SSB और रिटर्न एग्जाम क्लियर करो. मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. अभी SSB का कोर्स आएगा, सेकंड कोर्स 2 या 3 मई को.
BOAC. Praveen Chaudhary, there are best world level facilities for sports in India. Golf, swimming, horse riding, cricket, football, hockey, boxing, basketball, volleyball, handball, और क्या बताऊँ, सब कुछ है. Himanshu Surya, South Indian population more skillful than North India. What is your opinion on lack of skills in youth? या अब ये BA BSc कर करके वी आर चर्निंग आउट, इंजीनियरिंग कर करके अनएम्प्लॉयबल. ये किसी नौकरी के लायक नहीं है, किसी नौकरी के लायक नहीं, बिकॉज स्किल सेट कुछ भी नहीं है. गौरंग मल्होत्रा, सर वाई पाकिस्तान इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिलिट्री रूल एज कंपेयर टू पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लॉ एंड रीजन वाई फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सी पाकिस्तान की किस्मत ये रही कि द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म जिन्ना डाइड वेरी सून एंड आफ्टर दैट मिलिट्री टुक ओवर पावर. उसके बाद military has been mostly in power or calling the shots from outside. The problem is Pakistan got a military much larger than what it should have. It is the only nation where the military has a nation. So they should have got a much smaller military. In case of India, we were lucky that our founding Prime Minister was Jawaharlal Nehru. Very tall leader. And his vision, he transformed this country. So India में very quickly when they saw what is happening in Pakistan and other countries जो उस टाइम फ्री हुए, सब जगह पे यही था. सब जगह दुनिया में फौजियों ने मतलब डिक्टेटरशिप चलानी शुरू कर. दे डिडंट ट्रस्ट द पॉलिटिशियन, दे थॉट हम चलाएंगे देश. बट इंडिया में द कांग्रेस पार्टी ऑफ दैट टाइम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कू प्रूफ्ड इंडिया. उन्होंने ऐसे रिफॉर्म लाए मिलिट्री में, मिनिस्ट्री में कि इंडियन आर्मी could never ever imagine, even if somebody made statements criticizing the political this thing, they were very quickly taken care of. So पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि वो आर्मी के हाथ में आ गए. हमारी किस्मत अच्छी रही कि हम डेमोक्रेसी से चले and we had some amazing leadership to take this country in the initial founding years. हिमांशु सूर्या, नक्सल समझाने के लिए मेरे को 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी. सर्च करो, थोड़ा गूगल सर्च करो, थोड़ा पढ़ो आप. Yeah, gig working should be encouraged to school and college students. Anyone over 16 years, 18 years must do some work. Yes, you are right, Aman. Fraternity means brotherhood. Yeah, fratricide, fraternity, fraternize, brotherhood. Very good, Aman. Thank you, Sonal Saxena. Thank you, Diksha. What are the qualities of team leader? सबसे पहली क्वालिटी है टीम लीडर की, पुट टीम बिफोर सेल्फ एंड नो ग्लोरी हंटिंग. अपने लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे दे. फिर टीम नहीं चलेगी. टीम मीन्स टीम सोचे कि हाँ यार, ही एग्जिस्ट, द लीडर एग्जिस्ट फॉर अस. Okay, Aman, if you feel, but legislature will not act on it. What about these people? What about people who are, who need these rights now? Parliament may not debate it for 10 years, 20 years. And which other such reforms have been brought out about Parliament? Please tell me how I can do PhD while serving in armed forces. PhD लिखा है आपने. साहिल आप कर लो, पहले ज्वाइन कर लो. मैंने PhD करी जब मेजर जनरल बना. ठीक है, हाँ, तो आते ही कोई नहीं आपको एडमिशन देगा कि फौज में आ गया है साहिल मेहता, भी इसको PhD कराओ फटाफट. वो नहीं होगा. इट मे टेक 15-20 years फॉर यू टू एनरोल फॉर PhD. या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज LWE एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको पता ही है जो होता है. Mozambique नहीं, Mozambique is a wonderful country. Weather is almost the same throughout. We didn't see peak winters or peak summer there. I stayed there for 1 full year. Best academy for OTS CDS, your own home. Miss Varsha Thakur, your own table and your own books. Sir, is Punjab becoming next Kashmir? No.
NO, no, in capital, not possible. Yeah, we may bring course for NDA and CDS written also in May. Very, very, very mentoring, good mentoring program. I'm just looking for to get good educators at less than half the cost of what others are giving. ठीक है, planning कर रहे हैं. How to prepare for GD topics? BOCC course में आ जाओ. No, none of this, any problem, whether it's Kashmir or Naxal or Punjab insurgency or anywhere else, has to be solved by not one issue कि डेवलपमेंट करा दिया, रोड बना दिया, प्रॉब्लम. लोगों के दिलों को भी जीतना जरूरी है. सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पुराने घाव हैं, उनको भी भरना होता है. तो इट रिक्वायर्स होल ऑफ ए नेशन अप्रोच टू सॉल्व सच प्रॉब्लम विच आर फेस्टरिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. Okay, we'll come to Kanpur. Gyanendra, thank you. Next BOAC, 2nd or 3rd May. Yeah, you can do PhD while you serve in armed forces, but after 20 years of service, not before that. Magazine current affairs का कल परसों मैंने डाला है. या अमन पिंटू, आई डिड गेट फैमिली टाइम, बट बीच में बहुत साल ऐसे होते थे जब फील्ड में रहते थे हम, बट छुट्टियाँ मिलती थी. YP motivational thought, sir, when I see your class, confidence automatically boosts. Thank you. Even when I see you, my confidence boosts. I should start thinking and writing in English. Yes, Sonal. No, I am not on Unacademy now. I have left Unacademy. I have left Unacademy in February. I am now on my own. Sir, I am serving soldier, 14 years served in infantry as हवलदार. सर मैं SCO कमीशन के बारे में बताएं. हाँ बिल्कुल, आप बलदेव, पहले आप इंग्लिश इम्प्रूव करो. पहला स्टेप है इंग्लिश इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो, फिर SCO कमीशन के लिए जाओ. SSB पे मैंने वीडियो शेयर करी है, एक पुरानी वीडियो मेरी अभी आज टेलीग्राम पे, देख लो उसको और माँ बाप को भी दिखाओ. वाई आई लेफ्ट अनअकैडमी? आई जस्ट लेफ्ट. छोड़ो. Can MSc AI student give technical entry? TS is for 12th standard pass out, not for MSc. सर बुक रीडिंग मिलिट्री स्टडीज़ कर सकते हैं क्या एज हॉबी? बिल्कुल कर सकते हैं, स्वैग से स्टडी, बट इंग्लिश इंप्रूव कर लो. मतलब हॉबी के बाद तब आएगी जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लोगे मेन SSB में. I was not a professor really, but I was a you can say equivalent to professor in staff college where I used to teach majors and lieutenant colonels. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए रोज जाओ दौड़ने के लिए, रोज दौड़ने के लिए जाओ, कुछ नहीं है. GP भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल इट इज. नेक्स्ट BOAC कोर्स मे फर्स्ट वीक. इंडियन एयरफोर्स X and Y विच इज़ टफर? आप बताओ, एक जवान के लिए भर्ती है और एक ऑफिसर के लिए, तो आप खुद आइडिया लगा लो. यू कांट कंपेयर द टू ना. कोई कहेगी सर NDA मुश्किल है या सिविल सर्विसेज मुश्किल है, मैं कैसे बता सकता हूँ? ऐसे चीज़ को तो रोस्ट कर सकते हो बस. विकास यादव, आई पास्ड क्लास 12 फ्रॉम सैनिक स्कूल तिलया. वहाँ बहुत बच्चे जानते हैं मुझे विकास, सैनिक स्कूल तिलया में. Thank you, Kishan Gusai. Thank you very much. Yeah, Dhoni is a team leader. We need a lot to stop foreign. नेक्स्ट इवेंट कब होगा आई डोंट नो, बट कल मैं गार्गी कॉलेज में जा रहा हूँ. कल गार्गी कॉलेज में जा रहा हूँ और 1 तारीख को रामजस कॉलेज में. रामजस कॉलेज इज नॉर्थ कैंपस, गार्गी इज साउथ कैंपस. सो जो बच्चे मेरे को मिलना चाहते हैं दिल्ली में, you can come to these 2 places. I'll meet you. Good question, Sahil. Do Indian Army really need martial race? If not, then why still exist in PBG? Regret. पहली बात तो रेस की स्पेलिंग गलत है. देखो, मार्शल की ठीक है, रेस RAI, रेस इज RACE. ये रेस है
तनख्वाह लेना, हाइट रेज करना, रेज RACE रेस, ये मार्शल रेस बोगी है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है मार्शल रेस, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। एनी बडी कैन बी अ गुड सोल्जर, एनी बडी, मैं बार बार रिपीट, एनी बडी कैन बी अ गुड सोल्जर एंड लीडर। आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस मार्शल रेस। एंड जो PBG में है, इवन दैट आई थिंक इज रॉन्ग। टाइम टू चेंज इट टू ऑल इंडिया ऑल क्लास, लाइक माई रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। हाउ यू कैन improve English? I can help you, otherwise you can do on your own, no issue. Yeah, Akshdeep Rajput, yeah, you need mentoring. I am here to mentor you, Akshdeep, no issue. अमन, सबसे सस्ता कोर्स किया मैंने, 8,500 से I brought it to 6,000. Class 10 marks matter in India? No, it doesn't matter at all. Yeah, degree given by IGNOU, all degrees are accepted, not only IGNOU, any degree equivalent to graduate is accepted. टेलीग्राम लाइव कर देंगे। अग्निवीर पे मैं बहुत बोल चुका हूँ। अमन पिंटो, माई व्यूज आर एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो इफ एंड बट विद मी। Without communication skill, Mayank Pundir, not possible. So please join BOCC course and give yourself 3 months, 4 months, 5 months. Thank you. चलो, all the best to you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दोबारा से टेलीग्राम का लिंक शेयर करता हूँ। जो नए बच्चे आते हैं, रोज़ नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वी हैव क्रॉस्ड 15,400. बाय द वे, कितना? 15,500 is our subscriber base today. 15,500 on Telegram. और ये वीडियो मैंने शेयर करी है, प्लीज़ ये वीडियो भी देख लेना एंड शो इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, शो इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। या ये मैं डाल रहा हूँ। और ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं वीडियो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, इसको भी मैं डाल देता हूँ यहीं चैट में। यू कैन शो इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो दिस वीडियो। ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB, ये वाली वीडियो तसल्ली से देखो। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे SSB की रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी। सिंपल भाषा में, हिंदी में समझा रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट टू यू। या यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन टेलीग्राम, आई विल आंसर। मुझे DM भी कर सकते हो, हमेशा आंसर मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आंसर करता हूँ, चलो, सो लव यू ऑल, enjoy the day, but take care, it's getting hot, take care, keep yourself hydrated, drink lot of water। और इस मौसम में तरबूज, खरबूजा, जो इंडियन फ्रूट्स हैं, सस्ते फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करो, ठीक है। और लस्सी का इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट टू यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल एंड आई एम हैप्पी टू हैव यू इन माई टीम। थैंक यू, जय हिंद।